Surya Namaskar is one of the most popular exercises in yoga. Most people might start off doing Surya Namaskar. Is Surya Namaskar the oldest one? Is it the best exercise for us to do? And what would be the way to start doing it? That's what we're going to talk about in today's video. And for that, I have with me the founder of Habuild, Saurabh Bothra. Thank you. Saurabh, thanks again for joining us. Is Surya Namaskar the best yogic exercise to do for a beginner? I would say yes. बट आई थिंक योगा में बहुत ही पर्सनल और इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस और चॉइसेस होते हैं. बिल्कुल. सो अगर किसी को शुरू करना है तो सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा है. बट कभी कभी क्या होता है, किसी किसी को ऐसा लगता है कि बहुत रिपीटेटिव है, तो किसी किसी को बोरिंग लग सकता है. सो आपका पर्सनल ओपिनियन है, ये चॉइस है आपका, आपको करना है या नहीं. बट अगर ऐसे बोलोगे तो बहुत अच्छा है. आई वुड पर्सनली, मुझे अच्छा लगता है और मैं रेकमेंड भी करता हूँ. अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे, सूर्य नमस्कार. टेक मी थ्रू सूर्य नमस्कार. समझो मैंने कभी किया नहीं, किया है कौन बट समझो मैंने कभी किया नहीं है, तो क्या से शुरू करें? बहुत सिंपल है. आई थिंक शुड वी जस्ट डू द सूर्य नमस्कार और यस, लेट्स डू इट. परफेक्ट. आई थिंक वी शुड स्टैंड अप देन, ऑफ कोर्स. तो हम जब शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार, तो वी आर स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ आवर मैट्स एंड देन आवर फीट आर लाइक अ लिटिल क्लोजर टू ईच अदर एंड देन वी स्टार्ट विद नमस्ते एंड वी आर स्टैंडिंग टॉल. तो हमको सीधे खड़े रहना है जितना हो सके और आप नमस्ते करेंगे. इफ यू आर कंफर्टेबल and if you know the Surya Namaskar sequence, it's always recommended to do it with your eyes closed. When you're starting, it's a good idea to keep your eyes open so that you're comfortable and sure what you're doing. Second was posture जो है हमारा, इसमें हमको हाथ ऊपर ले जाने हैं. Step number 1 for pose 2 is stretch up first. When you become sure and comfortable with this, just push your waist forward. A gentle push is also enough. You don't have to overdo it. And then position number 3, you have to go forward and down. Now here, if you have a back condition, it's always recommended to not do Surya Namaskars. But if you're safe and fine, just bend your legs to start with and drop your hands. It's okay if they are not touching the floor, no problem at all. This is position number 3. And then before you go to position number 4, you bend your legs so that your hands are completely on the floor so that you take proper support. And then you take your right foot back as far as possible behind. This is position number 4 and you look forward. सामने की ओर देखना है और आपको कोशिश करना है कि आपकी जो हिप्स है आप उन्हें जमीन की तरफ प्रेस कर रहे हो so that you get a stretch in your hamstrings and a little bit in your quads. तो पीछे वाले पैर में quads में stretch आएगा और सामने वाले पैरों में hamstring पे stretch आएगा. So अभी तक हमारा बैक एक्सटेंड हुआ है, फ्लेक्स हुआ है और अभी वापस एक्सटेंड हो रहा है. हाँ, बोल सकते हैं. तो आप पूरा नीचे तक जा सकते हो. घुटना यू कैन कीप इट डाउन ऑल्सो इफ यू वांट टू, और यू कैन कीप इट स्ट्रेट. बोथ आर फाइन. पूरा हाथ जमीन पे अच्छे से रख लो. यू गो टू पोजिशन नंबर 5 विच इज दंडासन, प्लैंक पोज भी कहते हैं इसे हम. एंड यू आर लुकिंग स्लाइटली फॉरवर्ड. एंड देन 6 के लिए यू कीप योर नीज डाउन, यू गो बैक इन चाइल्ड्स पोज. पूरा अच्छे से स्ट्रेच कर लो और फिर आप धीरे धीरे आगे आ रहे हो एंड यू आर कीपिंग योर चिन डाउन. दिस इज कॉल्ड अष्टांग नमस्कार. 8 body parts are touching the floor: chin, hands, chest, knees and your toes. This is position number 6. For 7 cobra pose, you make your tail 1, which is join your feet together. Hands are right under your shoulders. Minimum support of the hands. Shoulders are relaxed and you lift your head and chest up. A gentle support with the hands and then you keep your body going up slightly more. You are pushing your shoulders back and down. Elbows are close. सामने देखना है और ऊपर नहीं देखना है. आपको नेक को भी थोड़ा न्यूट्रल रखने की कोशिश करनी है. And you feel the erector muscles, which is your muscles around the spine. And then from here you push back to position number 8, which is Adho Moksha Svanasana or downward dog. Try to press your heel in the floor. And then you try to bring your right foot forward again. Ideally, it should come between your hands, but things are not always idle. So it's absolutely fine if you're not able to reach there. So now I can reach almost till my wrist. No problem. It's okay. Even if someone is here, I don't think it's a problem to start with, but ideally it should happen over a long period of time. Right. And then you bring your left foot forward
We are again bending the legs and we are keeping the back straight as much as possible. Then we stretch our hands up again, push the waist forward, and we do a namaste. So this is one round of Surya Namaskar, but we need to do one set of Surya Namaskar. So जैसे हम बोलते हैं 108 Surya Namaskar किए. So technically it means 54 set. One set will have one Surya Namaskar with the right leg first and one with the left. So एक left से भी कर लेते हैं. Namaste. 2, stretch up. 3, go forward and down. Again, you bend your legs to reach the floor. And then you take your left leg back this time. इस बार लेफ्ट पैर हम पहले पीछे लेकर जाएंगे. And then right leg. 5. And then 6. You go back in child's pose first and then you stretch forward for Ashtanga Namaskar. Then you do 7 Bhujangasana. Then you do 8 downward facing dog or Adho Moksha Svanasana. And you bring your left foot forward as much as possible. Don't try to be perfect. Try to take action. And then 10. You bring your right foot forward. 11. You stretch up. And 12. Namaste. तो हमने बहुत बातें की बीच में, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया. अदरवाइज 1 मिनट में 2 सूर्य नमस्कार तो हो ही जाते हैं. तो दैट मीन्स अगर 2 सेट करना है तो 2 मिनट. 2 मिनट मैक्स. तो टाइम नहीं है, अगर 4 सूर्य नमस्कार कर लो बहुत है, काफी है टू स्टार्ट विद एज अ बिगिनर. और ये ऐसा एक्सरसाइज पैटर्न है जिससे बॉडी का ऑलमोस्ट हर एक मसल यूज होता है. करेक्ट. बैक, चेस्ट, आर्म्स, ट्राइसेप्स, सब कुछ. लेग्स. अगर तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं है तो दिस इज अ गुड फंक्शनल एक्सरसाइज. करेक्ट. इसमें आपका स्ट्रेंथ, मोबिलिटी, टोनिंग, बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है. राइट. फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ रहा है आपका. आप ऑलमोस्ट सारे जॉइंट मूवमेंट्स को यूज कर रहे हो. हार्ट रेट भी बढ़ रहा है. हार्ट रेट भी थोड़ा सा बढ़ रहा है. दिस इज अ परफेक्ट एक्सरसाइज गाइज. आई होप आप लोग सब ये ट्राई करो. लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप ऑलरेडी करते हो क्या. डू यू ऑलरेडी डू सूर्य नमस्कार डेली, और इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे. I've been wanting to make this video for a while and I found the perfect teacher to do this with. Thanks Saurabh. Thanks so much. Most welcome. I'll see you soon. Bye everyone. Take care.